The CBI seeks extension of P. Chidambaram's custody by 5 more days today, saying that new facts have now emerged in the case. Bulandshahr slain cop's family now claim they're under threat. Comment comes in after accused have now been released on bail. Another case of mob violence in lawless Uttar Pradesh. A man tied to a tree, beaten up in Barabanki on the suspicion of theft. 2 people have been arrested so far. भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं. Prime Minister Modi meets with US President Donald Trump on the sidelines of the G7 summit, making it very clear, sending out a clear message on Kashmir. All Indo-Pak issues are bilateral. Trump says he's sure that Pakistan and India will be able to work it out. You're with the big story here. I'm Seher Zama. This is the day after 7 persons accused of rioting in the Bulandshahr mob violence, where Sub-Inspector Subodh Kumar Singh was shot dead. They were released from jail on bail. The late police officer's wife, Sunita Singh, has spoken to Times Network, raising serious questions on the law and order situation in the state of Uttar Pradesh, also alleging that she's used to getting threat calls now from the accused when they were in jail. Now that they're out, the life of her family is in danger. Police inspector's wife demanded the government here to cancel the bail of the accused. We should remember here that the accused were garlanded, given a hero's welcome by their supporters when they stepped out on bail last night. देखिए, दुख नहीं, इंसान को अंदर से तोड़ने वाली चीज़ें होती है ये. आप किसी को आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन आश्वासन देते समय क्या आप ये देखते हैं कि इनको निभाने की क्षमता है आपकी? अगर आप किसी को आश्वासन देते हैं तो उनको निभाइए. धमकियां भी देते थे लोग आपको, आपके पुलिस को संज्ञान में डाला, फिर भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को बता नहीं पाए कि जेल से भी ये धमकी दे रहे, बाहर आके पता नहीं क्या करेंगे. हाँ, जेल से भी धमकी, इसीलिए तो मैंने कहा कि मुझे जान का खतरा है, इनकी बेल को कैंसिल किया जाए. अब ये बेल पे आ गए हैं, आपको लगता नहीं है वो जिस तरीके से पॉलिटिकल गेन के लिए अपने आप को वापस पार्टी इनको इस्तेमाल करेंगी, ये फिर से उसी तरीके की चीजें करेंगे? बिल्कुल होगा, यही होगा. देखना कुछ दिनों बाद यही होने वाला है. अभी क्या मुख्य मांगे हैं मैम, क्योंकि अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है. एक तो सरकारी वकील इस केस को जिस तरीके से लड़ना चाहिए उस तरीके से लड़ें. रेगुलर अपनी एविडेंसेस दें वहाँ जाके, और हर पेपर को जो है, जिस पेपर की इनको आवश्यकता होती है उसको ले आकर ये यहाँ से. और इस केस में मजबूताई भी तभी आ सकती है जब ये सरकारी वकील इसमें अपना रिएक्शन दिखाएंगे. और मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इनकी बेल को कैंसिल किया जाए, और कुछ नहीं. मेरे और मेरे पूरे परिवार का शुरू से यही कारण रहा है कि हम ऐसे लोगों को समाज में नहीं रहना चाहिए. इन लोगों को जेल में रख के हम ये अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि ना तो ये घटना होए आगे चल के, और ना ही ऐसे लोग आगे चल के इनको बढ़ावा मिले. तो मेरी न्यायपालिका और बाकी सब समाज के सभी वर्गों से यही उम्मीद है कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित ही ना करें. हमें इनकी बेल कैंसिल करानी चाहिए, और हमें ऐसे लोगों को अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो ना तो वो आगे बढ़ेंगे, ना ही वो एग्जाम्पल सेट करेंगे किसी के लिए. The family once again in a state of shock 6 months after that horrifying case of violence, case of rioting in which Sub-Inspector Subodh Kumar Singh was shot dead. We have with us our correspondent Alok getting us further inputs here. Alok, this would mean a huge question mark as far as the police SIT here is concerned, because they had claimed all along, with investigations complete, having filed the charge sheet, that they have a watertight case. And yet we have 7 of those accused walking out on bail.
Yes, absolutely. This case is of 3rd of December last year when Subodh Kumar, who was posted at Chingravati police station, which comes in the Siana area, and he was shot dead by that angry mob. That mob gathered there in the suspicion of carcasses, and there that mob got violated, and they in fact opened fire on the police personnel, in which Subodh Kumar died. Later, after that, police registered 3 separate cases, and in fact, remember, apart from Subodh Kumar, there was one person who was the resident of that area who was also shot dead, and in fact, there was an NSA case was also slapped into this whole investigation. So 3 separate cases were registered, and 45 persons were arrested till March this year. And apart from that, of those 45, 15 got bail last week. These 15 persons, a few of them are allegedly in fact associates and are the members of the Hindu right wing, and of them 15, 7 were released by the Saturday, and on Saturday 6 were in fact released, and the video that we are showing on the television screens for our viewers are of 6 persons, and in fact 2 of them who are basically members of the Hindu right wing. They were in fact garlanded by the people of that basically particular group, and in fact they were also welcomed by them. And what we are getting to know that there was also posters were in fact published, and in fact they were pasted in the same area before they were got bailed. So yes, it really raises a serious question on the law and order of the Uttar Pradesh, and in fact it also raises question on the Uttar Pradesh's police's investigation, how they failed to submit the evidence before the court. Let's put that question forth here to the BJP. Alok, stay with us. Mr. Rakesh Tripathi of the BJP with us over the phone line. Mr. Tripathi, there are questions being asked. This is, of course, with respect to the slain sub-inspector's family, who's spoken to the Times Network, who's made it very clear that they continue to receive death threats from the accused. And now that so many of them are walking out on bail, who's going to provide protection to them? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पर आपको कहूं कि बेल देने का काम न्यायपालिका का है। न्यायपालिका ने उनको बेल ग्रांट की है। इसमें राज्य सरकार ने किसी प्रकार की ना कोई लापरवाही बरती है, ना राज्य सरकार इस पूरे मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने वाली है। हम इस बात के लिए बहुत कठोरता से पक्षधर हैं कि जिन लोगों ने भी शहीद सुबोध कुमार सिंह की हत्या करने का काम किया है, उन लोगों को कठोरता से दंड मिले, और प्रोसिक्यूशन को जितनी भी अपने तैयारी करनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्यायपालिका को पूरी ताकत है, पूरा अख्तियार है कि वो किन एक्यूज्ड को बेल ग्रांट करता है, कर सकता है। और ये नहीं, मगर राकेश जी, जब आपकी पुलिस एसआईटी ये बोलती है कि जितने भी अक्यूज्ड हैं, जिसमें से 5 मर्डर अक्यूज्ड हैं, उनको तो बेल नहीं मिली है, मगर जो राइट अक्यूज्ड हैं, और ये कोई मामूली राइट केस नहीं था, इस राइट में एक लोकल पुलिस स्टेशन को आग लगाई गई, इस राइट में एक सब इंस्पेक्टर को अटैक किया गया, ही वाज लिटरली चेस्ड डाउन एंड शॉट डेड, और फिर उनकी गाड़ी भी जलाई गई। इन ऐसे भयानक राइट केस में जब आपकी पुलिस कहती है कि जो अरेस्टेड हैं, जो हमारी चार्जशीट तैयार है, दिस इज एंटायरली अ वाटर टाइट केस, तो इतने लोगों को बेल कैसे मिल गई? बेल कैसे मिल गई? ये बेल देना न्यायाधीश का विवेकाधिकार होता है। ये राज्य सरकार तय नहीं करती है। राज्य सरकार ने इनको कोई छोड़ने के लिए आदेश जारी किया, ऐसा नहीं है। ये बेल देना विशुद्ध रूप से न्यायपालिका में न्यायाधीश का विवेकाधिकार होता है, और जो भी बेल आर्गुमेंट्स किए गए होंगे उनके काउंसिल्स की ओर से, उनके अधिवक्ताओं की ओर से, न्यायपालिका ने उससे कन्विंस होकर के उनको बेल देने का काम किया। और बेल देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो निर्दोष साबित हो रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी, या वो गिरफ्तार हो जाने से दोषी साबित हो रहे हैं। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशंस पे सवाल किए जा रहे हैं, वाटर टाइट चार्जशीट, वाटर टाइट केस जो वो कह रहे थे, उस पे सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे सवाल है। उन्होंने वाटर टाइट केस जो उन्होंने कहा था, अगर वो नहीं है, इसलिए अक्यूज्ड को इतनी आसानी से बेल मिल गई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। पुलिस को जो कुछ भी कार्रवाई इसमें कर रही थी, चूंकि एक पुलिस साथी की ही उनमें मृत्यु हुई है, उनकी हत्या हुई है, ऐसी स्थिति में पुलिस किसी प्रकार की लापरवाही करेगी, ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस पूरे मामले को बहुत प्रायोरिटी राकेश त्रिपाठी जी, ये जो अक्यूज्ड हैं, ये जो अक्यूज्ड बेल पे हैं अभी, उनमें से कुछ 7 लोग जो कल रात को छुड़ाए गए थे, ये अभी भी अक्यूज्ड हैं। बेल पे निकलना उसका मतलब ये नहीं है कि दे इनोसेंट, दे स्टिल अक्यूज्ड बट दे आर आउट ऑन बेल। क्या आपको लगता है, जिनमें से एक भाजपा के युवा नेता भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी नेता हैं, क्या आपको लगता है
अक्यूज्ड को इस तरीके का वेलकम मिलना चाहिए, जिस पे मालाएं चढ़ाई जाएं, जिसके पोस्टर निकाले जाएं, in a sense of a huge celebration that they walked out on bail. मैं एक बहुत निवेदन के साथ इतनी बात कहूंगा कि एक्यूज्ड का मतलब ये भी नहीं होता है कि वो दोष सिद्ध है। हो सकता है कि न्यायपालिका के दोष मुक्त घोषित किए जाएं। इसलिए ये तो उनके परिजनों का, जो भी एक्यूज्ड है उनके परिजनों के सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, उनके चाहने वालों के सेंटिमेंट्स हो सकते हैं। मैं इस बात के साथ न कोई अपनी सहमति जता रहा हूं, न मैं कोई इस पर असहमति जता रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की किसी एक्टिविटीज को ना इंडोर्स करने का काम कर रही है, हम ना इस तरह के किसी काम की प्रशंसा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे किसी काम पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती है। कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं का इजहार करे जो विधि की परिधि के दायरे में हो, तो उसको ये करने से रोका नहीं जा सकता है। जो सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने अपने ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे फिर से यही सवाल करूंगी कि ऐसे भयानक राइटिंग केस में आरोपी को बेल कैसे मिला? बेल इसलिए मिला क्योंकि पुलिस कोई सबूत नहीं सबमिट कर पाई एज एविडेंस ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द राइट्स। पुलिस ने जो कहा था, जो आश्वासन दिया था फैमिली को कि ये एक वाटर टाइट केस है, जितने भी अरेस्ट हुए हैं वो जेल के अंदर ही रहेंगे, हैज द पुलिस वीकेंड द केस हियर? And I'm asking this to you, Mr. Tripathi, because we have reactions that have come in from the concerned family saying that they have continued to get death threats from the accused and now that they have walked out on bail, आपकी सरकार क्या आश्वासन देती है? उनको क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा? फैमिली को, सुबोध कुमार सिंह की फैमिली को क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा इस वक्त पे? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि शहीद सुबोध कुमार सिंह के परिजनों के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की इस तरह की शिकायत दर्ज कराई जाती है कि किसी पर्टिकुलर टेलीफोन नंबर से या पर्टिकुलर तरीके से अगर उनको कोई डेथ थ्रेट आया है या किसी प्रकार की कोई थ्रेट आई है, तो सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करेगी और पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। उनको जिस तरह की भी सुरक्षा की आवश्यकता होगी, निश्चित तौर पर उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि उनके पति सुबोध कुमार सिंह या उनके परिजन जो भी आज जीवित हैं, उनके पति हो या पिता हो, सुबोध कुमार सिंह जी इस उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जाबाज अधिकारी थे और उन्होंने अपनी शहादत दी है। उनके परिजनों को हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। उनको जिस तरह की भी सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि इस मामले में जो 302 के अभियुक्त हैं, उन अभियुक्तों की अब तक जमानत नहीं हुई है और हमने पूरी तरह से प्रयास किया है, पुलिस भी इस बात का लिए प्रयास कर रही है कि प्रोसिक्यूशन में किसी प्रकार का कोई लीकेज न रहने पाए ताकि उनको कोई लाभ न मिलने पाए। लेकिन इस पूरे मामले में विशेष करके दंगे के मामले में, जहां पर बहुत बड़ी भीड़ इन्वॉल्व होती है, लोगों के चेहरे आइडेंटिफाई करना या उनकी भूमिकाओं को निश्चित कर पाना ये बहुत कठिन होता है। देश के अलग अलग दंगों में लोगों को भूमिकाओं को चिन्हित कर पाना। राकेश त्रिपाठी जी, कठिन होगा मगर पुलिस का काम है वाटर टाइट केस बनाना। अगर इस केस में 40 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से 15 लोग को बेल मिल रही है, जो अभी आने वाले दिन में और छोड़े जाएंगे जिनको बेल मिल चुकी है, डोंट यू थिंक दैट्स अ वरीसम साइन? क्या केस था पुलिस का फिर, अगर उसमें से आधे लोग बेल पे बाहर जा रहे हैं? Let's switch our focus back to what we were discussing earlier. This is with respect to those accused in connection with the Bulandshahr violence, in which Sub-Inspector Subodh Kumar Singh was also shot at in that writing. Several of those accused now, 7 were accused who were released on bail last night. As our correspondent has been informing us, a total of 7 are going to, a total of 15 in this case are going to be eventually stepping out now on bail. We're getting in more voices here on this. Our correspondent Alok getting us those details. We also have with us senior journalist Mr. Vinod Sharma over the phone line. Mr. Sharma, appreciate you being with us. In your view, is there a sense that this was a weak case which was put forth by the police with no further evidence, an agreement coming in that these accused can step out on bail? Well, you see, bail is a right of an accused. I mean, there's no doubt about that. But this right is being granted very selectively to people depending on the disposition of the powers that be towards them. The question is not whether these people have come out on bail. The question is whether the prosecution has presented a strong enough case before the court to show these people as once having been behind the shooting incident. There is a uniformed police officer who has been shot at. It is not an ordinary crime. And the reports have it that some of the people who have been released from bail have had rousing receptions, garlandings and other things. So
kind of political situation and the law and order situation that obtains in Uttar Pradesh is a cause of great worry, should be a cause of great worry, not just for the people, but also the government at the center. It doesn't really show the government in UP, which is the same party ruling, in a happy light. I mean, they are not covering themselves with glory at all. The way they are these cases are being investigated, and the way the people are getting away scot-free. Mr. Sharma, this was a personal assurance that was also given by the Chief Minister of Uttar Pradesh there, saying that justice would not be denied to the concerned family of the slain sub-inspector, Mr. Subodh Kumar Singh. They're now in a state of shock. They're saying that they feel vulnerable despite all assurances, and the police SIT saying that this is a watertight case that they're looking at. We have at least 15 of them now walking out on bail, and the family makes it very clear that they have received death threats, and now that they're out on bail, now that you have these accused out on bail, they're feeling vulnerable about this. Of course, they have all the reason to feel vulnerable, because if any kind of tacit political protection or umbrella is afforded to the accused, just because what they did was in consonance with the political objectives of certain political forces in the state, people will lose faith in our criminal justice system. They've already lost a lot of faith. The criminal justice system in our country is in a pathetic state where courts have often, while letting off accused, said that the evidence presented before them was very weak and grossly inadequate. Take the case of Pehlu Khan in Rajasthan. I mean, the courts have said that they have had to let off the people because the evidence before them was weak, and that certain evidence which is available, forensic evidence, now that it's coming out, available with the police, was not presented before the court. So isn't that shocking? It shocks me immensely. And Mr. Vinod Sharma, in this case, are you saying that from your understanding, this is perhaps a clear case of the police not putting up a strong enough case, not with respect to what their claim was, that all accused in jail, there is enough evidence against them, this is a watertight case, but this isn't the case? You see, the court may say, the police may say one thing before the media, there may be assurances given by the political masters, but many a times these assurances turn out to be mere lip sympathy. They have to match their words with action, which is not happening far too frequently. All that I'm saying is that I don't have access to the evidence that the police has collected and the documentation that has been presented before the court during bail hearings and other proceedings. All that I'm saying is that there are innumerable cases which puts one, maybe forces one to reflect and stand in one's tracks and think that whether our courts, whether justice is being dispensed in our country adequately, and whether our prosecution system is above all. Right. Let's also have former cop Mr. Sipal Singh with us on the phone line. Mr. Singh, thank you for being with us. Are you shocked the ease with which so many of the accused in this case have managed to walk out on bail and then given a hero's welcome? Incident in your news channel, we very well knew at that point of time itself that the approach of the police was very, very lackadaisical. They were already thinking more about the cow slaughter than about the person who were accused. Even at one time, the minister who went there, he says, have you registered a case against those people who have done the cow slaughter? Instead of asking, have you registered a case against those who have murdered the inspector of the police? So that was a lackadaisical approach. Now, you see, the total, I understand, a very voluminous sort of case diary has been made. There are about 3,400 or 3,500 pages case diary of the police. And the charge sheet goes into, I think, more than 100 pages. And there's absolutely, what is the pith in that? The pith is that out of that, most of them who have been accused have been charge sheeted under writing and arson, and not again for murder. And in this particular case, in this particular case,
that particularly these two, one was of the Bharatiya Janata Youth Party and the second that Fauji, they were found to be, they were first of all named as conspirators. And you'll be sorry to know that one of them who has now been released is Bharatiya Janata Youth Party leader. He was funding for... Well, this is most certainly further going to be discussed and more details of this through the day. For the moment, we're slipping into it.